हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज मैं एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एंड दैट इवेंट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पायरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एग्जामिनेशन। सो जस्ट इमेजिन कि अगले साल आप प्रीलिम्स दे रहे हो। द एग्जामिनेशन इज इन मे। प्रीलिम्स आपने दिया, आपका बहुत अच्छा गया, यू आर एबल टू क्लियर बोथ जीएस एंड सीसैट। इमेजिन ऐसे सिचुएशन में यू हैव ऑलमोस्ट 95 to 100 days between prelims and mains and आपने usually after prelims people are exhausted 5 to 10 days they are not able to study। तो क्या होता है, रिमेनिंग 90 days बच जाते हैं। सो इमेजिन कि आपके पास 90 दिन है एंड यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, राइट फ्रॉम जीएस 1 2 3 4, ऐसे ऑप्शनल के 2 पेपर, यू हैव टू राइट टेस्ट। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? आप खुद से पूछिए। इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपका एम इज नॉट जस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स। नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस कि आपका रैंक आए। लुकिंग एट द कंपटीशन, प्रीलिम्स निकलना इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो यू डू नॉट वांट टू वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी कि आपका प्रीलिम्स निकले एंड यू आर नॉट रेडी फॉर मेंस। सो व्हाट इज द राइट प्रिपरेशन? So what is the strategy? The strategy is right from now onwards till November end, make sure you are ready with mains। आपके हर एक टॉपिक पर आपके हैंड रिटन नोट्स रेडी है, आपने डेली आंसर राइटिंग किया है, आपने टेस्ट लिखे हैं एंड आपके पूरा कंटेंट रेडी है। जब प्रीलिम्स एंड मेंस का टाइम इज नॉट टू प्रिपेयर कंटेंट, इट इज टू रीड न्यू करंट अफेयर्स व्हिच इज देयर ड्यूरिंग दैट 3 months। सेकेंडली, इट इज टू रिवाइज थिंग्स एंड राइट टेस्ट। इट इज अ टाइम नॉट टू रीड थिंग्स बट टू रिवाइज, रीड करंट अफेयर्स एंड राइट टेस्ट। अगर आपका अभी बेस रेडी नहीं है टिल नवंबर, आप यू आर गोइंग टू फॉल इन दैट साइकिल जहां आपका प्रीलिम्स निकल रहा है लेकिन मेंस नहीं निकलेगा एंड यू विल फॉल इन द सेम साइकिल अगेन एंड अगेन एंड यू वुड वेस्ट सो मेनी इयर्स। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, इमेजिन कि अगर आपका नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकलता है, आपका वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग। आपके हर एक टॉपिक पर आपके नोट्स रेडी है, यू आर जस्ट रिवाइजिंग, एडिंग करंट अफेयर्स, राइटिंग टेस्ट। तो ये फेज होना चाहिए 3 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ऐसे नहीं कि तब नया बुक्स पढ़ रहे हो, आप कंटेंट कलेक्ट कर रहे हो। इमेजिन 90 days में अगर 7 सब्जेक्ट्स आपको 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यू हार्डली गेट 10-12 days and it's literally impossible to read at that moment and to start preparing things। it's important कि आज से नवंबर तक का टाइम, नवंबर एंड तक का टाइम, दिसंबर एंड तक का टाइम, यू फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। हर एक टॉपिक पर क्रिस्टल क्लियर नोट्स रेडी है। आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए। आई हैव अपलोडेड फ्यू नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स आपको बनाने चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर अगले बार प्रीलिम्स में निकल गया एंड मेंस के लिए रेडी नहीं है तो पूरा अटेम्प्ट वेस्ट है। कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपने कितने प्रीलिम्स निकाले हैं, दे वुड जज यू कि आपने रैंक निकाला है नहीं निकाला है। एंड आप इस मोमेंट में जितना आप एफर्ट्स मारोगे उतना आपका अच्छा रैंक आएगा, यू विल गेट अ बेटर सर्विस, यू विल गेट अ बेटर कैडर। सो मेक श्योर यू मेक योर प्लान्स, स्टडी इन अ टारगेटेड फॉर्मेट। हमारे संकल्प बैच में यही हो रहा है। हर एक मंथ में हम एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एंड बच्चों के पास उनका एक ही टारगेट है कि उनका ऑप्शनल करना है। एवरी टॉपिक पर हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स रेडी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो नोट्स बना रहे हैं। हर एक टॉपिक पर हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स रेडी है, 2-pager नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, राइट फ्रॉम एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स, GS3 में फार्म सब्सिडीज, हर एक पर 2-pager नोट्स। दे आर एबल टू रिवाइज द कंप्लीट GS2 दे कैन रिवाइज इन 2 days। Can you revise in 2 days? Between papers also you get very less time। मैं चैलेंज करता हूँ कि कौन 2 दिन में GS2 रिवाइज कर पाएगा। हमारे स्टूडेंट्स, दे हैव देयर नोट्स, उनके 100 pages नोट्स रेडी है which they can revise because उन्होंने सोचा है, उन्होंने समझा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने सुना है। तो that's the complete preparation and they are able to reproduce that in examination। If you have any of your friend who is joined Sankalp batch, आप उनसे पूछिए। The important is the process. What we have ensured, हमारा टारगेट यही है, नवंबर एंड तक हर एक टॉपिक पर उनके नोट्स रेडी चाहिए सो दैट दे आर रेडी फॉर मेंस। अगले बार जब प्रीलिम्स निकलेगा, दे आर रेडी फॉर मेंस, दे आर रेडी टू राइट आंसर्स। सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एंड 90% ऑफ द स्टैटिक पार्ट इज डन। दे वुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू इमेजिन दैट सिचुएशन कि अगले बार प्रीलिम्स निकला तो क्या है। आर यू रेडी विद द मेंस कंटेंट? आपके पास नोट्स रेडी है, आपका ऑप्शनल डन है क्या, आपने टेस्ट सीरीज लिखे है क्या, आपको पता है कैसे डिमांड आइडेंटिफाई करना है? अगर नहीं पता है तो ये 4 महीने बहुत इफेक्टिवली यूज कीजिए। होप यू गेट द आइडिया आउट ऑफ दिस लेक्चर। इट इज नॉट टू फियर यू बट टू शो यू रियलिटी कि फ्यूचर में क्या होगा। 10,000 बच्चे मेंस देते हैं लेकिन 6-7 हजार बच्चों के पास कुछ भी रेडी नहीं है। दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स तब से एंड इट्स इम्पॉसिबल, दे गिव अप। तो मैं यही चाहता हूं कि नेक्स्ट 4 months आप इफेक्टिवली यूज करें। होप दिस एडवाइस इज हेल्पफुल फॉर यू। Take a positive out of it and do check out our Sankalp batch. Thank you. Hi, this is Anjalees Story. I have secured rank 44 in UPSC Civil Services examination of 2021. I've been associated with Sudarshan Lodha sir and I've been a part of Sankalp mains program at Target UPSC. The important part in the Sankalp mains batch was that we were given a dedicated mentorship under the direct guidance of sir.
and he was always available 24/7 for any doubts to us. The most important part of Sankalp Mains batch was the brainstorming sessions that we had. In every class of around 2 hours, at least for 1 hour, after a particular question or theme was given to us, we used to brainstorm over 6 to 7 themes or questions being asked to us. उससे ये हुआ कि I was able to think on the spot. I was able to generate points even for those topics that I was not that I had not read previously. Secondly, I was prepared for mains in the sense that if there's a question which is out of box, मैं उसको बहुत अच्छे से लिख पाऊंगी because I know the art of brainstorming on the spot. So I was able to generate at least 10 to 15 points on the spot अगर कोई question या कोई topic मैंने नहीं भी पढ़ा है. Thirdly, हमें संकल्प में interlinkages of topics भी बताया गया था that in GS1 कैसे मैं GS3, GS4 को interlink कर सकती हूँ, कैसे हर question में एक ethical dimension लाकर I can increase my half marks also. So that was also told to us in the Sankalp batch itself. Apart from that, GS3 में the syllabus is so huge कि अगर हम खुद से notes बनाने बैठे so it takes a lot of time. तो संकल्प मेंस बैच में GS3 में for every topic सर ने हर टॉपिक के 1 पेज 2 पेज नोट्स बनवाए थे. सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, ARC की, नीति आयोग की, everything was compiled into 2 pages very systematically. And I just had to memorize that and reproduce it in the examination. So it helped me a lot even for my GS3 preparation. And GS4 में जो हमारा मेंस बैच में था, we were given हर एक topic which is mentioned in GS4 in ethics, we are given a separate definition, diagrams, quotations, case studies. So that helped me improve on my content. मैंने बहुत सारे ethics में भी diagrams बनाए जो कि मैंने directly सर के handwritten notes से ही उठाए थे. So that helped me get a very good score. So I think अगर आप एक dedicated और एक focused preparation lack कर रहे हैं mains में, so that was the case with me and I joined Sankalp and it gave me a very good direction in that sense. Particularly for GS3 and GS2, Sankalp mains batch ने मुझे बहुत support किया है in the sense that GS2 में we always think that it's the dynamic part which is the most dominant and we run after current affairs in GS2. But after I was a part of Sankalp batch and Sudarshan sir told me that it's mostly static when you see the paper, and I also felt the same. There are questions of president, ordinances, governor. So ये questions वो होते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं after prelims because we never revise Lakshmikant because we are always running after some current affairs. This time also I remember there was a question on legislative council and many of my friends were not even able to remember the article of legislative council. So संकल्प मेंस बैच में एक प्रॉपर बैलेंस था between static as well as the dynamic portion of the syllabus. Hello UPSC aspirants, welcome to Target UPSC. Are you planning to join any mains test series? I would request you to watch this complete video before making any decision. As all of you know, the test series forms an important pillar of mains preparation. But before jumping on the test series, you have to ask, have you analyzed every topic of the syllabus? Have you brainstormed over every topic? Have you made notes on every topic of the syllabus? Have you practiced daily answer writing? And then the last phase is test series. But बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट द थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विदाउट मेकिंग हैंड रिटन नोट्स, डायरेक्टली जंप ऑन टू द टेस्ट सीरीज. वो 1-2 टेस्ट देते हैं, कम नंबर आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट राइट मोस्ट ऑफ द टेस्ट. बट द रियल प्रिपरेशन फॉर मेंस इज नॉट जस्ट टेस्ट सीरीज और राइटिंग आंसर, बट द प्रोसेस बिहाइंड इट. So to solve this problem holistically, Target UPSC have brought out a holistic program where we are not just focusing on test series but on the entire process of mains preparation. So to tell you in details about our Sankalp Integrated Mains Program 2023, first thing what we are going to do is we are going to brainstorm on every topic of the syllabus. We'll make you think on the topic. After that, what we do is we would teach that topic in a crisp format, ensuring that on every topic you have the right content, right diagram, right example, right data, and also teach you to how to interlink topics. To give you an example, reason for poor parliamentary functioning is degrading value. So you're linking GS2 to GS4. तो इस तरीके के linkages हम सिखाएंगे. After that, what you do is you make your own handwritten notes in the class itself. If you analyze all the UPSC toppers, one thing you will find in common is they have made their own handwritten notes because it's very too easy and very easy to remember.
And through this process, what we ensure is कोई भी question आए, you would be able to interlink between different subjects and get the right content for the right question. After this, what we have is we have daily answer writing sessions where we give you 2 to 3 questions to practice. And after every 15 days, we take a test which would be thoroughly evaluated and there would be personal guidance. Apart from this, what we ensure is you maintain consistency with respect to your mains preparation. What we do is we give you a personalized timetable, tracking sheets. We have a monitoring call every week so that you are motivated and we keep a track on your preparation. And every 15 days, what you have is a mentorship call where we'll be giving personalized suggestions to improve your answers. So in this program, what we're going to have is brainstorming on every topic, developing your own handwritten notes, focusing on structuring of answers, daily answer writing and test series. So this is the most holistic approach. So after this program, you will be able to generate points on every topic, you will be able to structure every question and you would be able to write the most holistic answer. The batch starts from 13th of June. We are only going to take 100 students for this batch. If you are serious about mains preparation, then only join this important batch. Hope to see you in the batch. Thank you. Hello aspirants, I want to tell you how Sankalp mains batch is a comprehensive batch. इसमें हम 3 पिलर्स पर काम करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कंटेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज प्रैक्टिस, दैट इज टेस्ट. फर्स्ट पिलर है दैट इज बिल्डिंग कंटेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट टेस्ट विदाउट हैविंग द राइट कंटेंट. तो हम क्या करते हैं, पहले कंटेंट बिल्ड करते हैं. सो हाउ डू वी डू दैट? हम इसमें क्या करते हैं, हर एक टॉपिक पर वी मेक यू थिंक, वी मेक यू ब्रेनस्टॉर्म. After that, we teach that topic, and third is we make you write your own notes. So at the end of the sessions, you would have notes on every topic of the syllabus. After you have the content, then we move to answer writing structuring. Every week we would have sessions by UPSC toppers where they would tell कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है एंड हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. तो ये सेकंड पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरिंग पर फोकस करता है. एंड देन वी मूव टू द थर्ड पिलर, दैट इज प्रैक्टिस. This is done through 12 tests and simultaneously daily answer writing practice where we give you model answers for self-evaluation. So effectively, if you see, it's the most comprehensive program. बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते हैं विदाउट हैविंग फोकस ऑन बोथ दिस पार्ट. सो इफ यू सी, वी फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट, नॉट जस्ट ऑन द टेस्ट सीरीज but on building your content, focusing on answer writing structuring and focusing on daily answer writing and tests. तो ये complete preparation है. If you ask any of the toppers, they would say they have made their own handwritten notes. So we make sure that you make your own handwritten notes and write tests also. One more thing is the tests are compulsory because we want every student to write the test. Hopefully you have understood the concept of Sankalp Integrated Mains Batch. Hope I am able to explain the core principle of Sankalp Integrated Mains Batch. If you have any further query, you can call on the number below and I'll ask and I'll solve all your queries. Hope to see you in the batch. Thank you.